Hello, dear children. So it's time to continue page number 98. Okay, 98. About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. So this particular section was going on, and Mr. Kanga is interviewing Stephen Hawking. Mr. Kanga, Mr. Firdos Kanga, he's from Mumbai. But when Stephen Hawking was alive, he interviewed him. And let's see, after his astonishing experiences, there are more such astonishing experiences he got, and how did they speak to each other. As Stephen Hawking is unable to speak, but he speaks through a machine, okay, through punch codes. So what does he say? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. Patronize me means what? Patronize means what? It means somebody is showing a lot of mercy on you. मतलब बहुत ज़्यादा दया दिखा रहे कोई तो, और नीचा दिखाने के लिए वो भी मीन्स just showing you that you are इनकैपेबल दैन मी, मतलब मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो आप, ऐसा शो करना मतलब पेट्रोनाइज करना. ओके, दैट इज नोन एज पेट्रोनाइजिंग समबडी. एंड यू फाइंड इट annoying when someone like me comes and disturbs you in your work. Now Mr. Kanga is asking Hawkins that do you get disturbed if someone like me comes and disturbs you in your work. तुम्हें मतलब दिमाग तुम बुरा फील होता है तुम्हें, मतलब डिस्टर्बेंस होती है क्या जब हम जैसे कोई मिलने आते हैं, इफ somebody comes like me. So what is the answer? Let's see. The answer flashed yes. Then he smiled his one way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. So the moment he questioned this, स्टीफन हॉकिंग रिप्लाइड येस, मतलब मशीन से आंसर आया येस, हाँ मुझे डिस्टर्बेंस होता है. एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग ऑन दिस जो ऑन दैट जोक, एंड ही टुक इट पॉजिटिवली. मिस्टर कांगा टुक हिज रिस्पॉन्स पॉजिटिवली. ओके. A first glimpse of him is shocking. Why is his first glimpse shocking? Because he is like a still photograph. Because he looks like a still photograph. मानो एक ही जगह पे वो मतलब ऐसे बैठे हुए हैं. Okay, still without any movement. So anybody looks at him at first will be in shock. As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. Three-dimensional. See how his appearance is described by Mr. Kanga. So you'll feel that whatever pictures you see in the magazines and different books, so they have become थ्री डायमेंशनल व्हेन यू सी हिम लाइव. जब आप उन्हें आमने सामने देखते हो तो ऐसा लगता है 3D में हम उनके फोटोज़ को ही देख रहे हैं. But he was a living person at that time when he was interviewed. Okay. Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. Okay, but when you observe him intensely, nicely, you can see a little body movement. Okay, in fact, when you look at his eyes, so you will definitely feel that there are deep thoughts in his brain, and he wants to say something very important to the world. This particular quality is in his eyes. This was observed by Mr. Kanga. Okay, so and he wants to tell something very urgent. मतलब वो जो भी बताना चाहते हैं that is very important and urgent. Okay, it is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. मतलब वो उसे words में describe नहीं कर पा रहे मिस्टर कांगा. He wants to tell you that when he saw uh, Mr. Hawkins, he realized that he had never seen something like this before, a person like him before. And you get shaken up, बिल्कुल move हो जाते हो, you feel desperately so uh, means intense and uh, deeply you just want to get involved in the conversation when you interact with that person. Okay. Before you like a lantern whose walls are worn so thin and you glimpse only the light inside, is the incandescent of a man. Okay. बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न, मतलब एक ऐसा लैंटर्न. एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि स्टीफन हॉकिंग को एक लैंटर्न के साथ कैसे कंपेयर करें. तो वॉल्स ऑफ अ लैंटर्न मतलब एक लैंटर्न, एक कंदील जिसे बोलते हैं. सो हिज इट्स वॉल्स मीन्स उसका जो कवर जो होता है वो बहुत पुराना अगर हो जाए. सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, बट स्टिल यू कैन ओनली सी द लाइट इनसाइड.
even if its outer covering has damaged and got very old and dull, but कोई ना कोई light अंदर ज़रूर नज़र आता है. Okay. Okay, inside is the incandescent of a man. Incandescent of a man. Incandescent means inner glow of light. मतलब आपको उनके अंदर से उसी तरह का लाइट नज़र आता है, even if his outer body is so different. So this is how it is. Human is compared with lantern. Okay, it is nothing but a metaphor. Okay, the body almost irrelevant exists only like a case made of shadows. The body almost irrelevant exists like a case made of shadows. तो उनकी बॉडी को मतलब जस्ट ऐसा लगता है कि मानो बस वो परछाई देने के लिए बनी एक जगह स्टिल है. ओके, सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स know that this is what each of us is, everything else an accessory. So that I know believer in eternal souls. तो eternal souls जो है मैं जानता हूँ कि this is what each of us is. तो इसी तरह हम सारे लोग बने हुए हैं, everything else as accessory. Okay, so this body is nothing but an accessory, but we have a different quality and we all have made similarly the way Hawking was made. But in even if his body was damaged, still he was shining like a superstar, superhero for some scientists also, because being physically challenged, still he was just giving his thesis uh, on his observation of the universe. Okay, what do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. So Mr. Kanga asked him that what is the best thing of being disabled. मतलब अगर आप physically challenged हो गए, if you are unable to walk, talk, then what is the best thing in you? Okay, I don't think there is anything good about being disabled. So, so he replies. He mentions that Mr. Hawking says that it is not. देर इज़ नथिंग गुड इन बींग डिसेबल्ड. मतलब डिसेबल होने में कुछ भी अच्छा नहीं होता अपाहिज होने में. ओके, आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देर इज़ इन द वर्ल्ड. आई थिंक आई सेड you do discover how much kindness there is in the world. Yes, he said. Then he mentioned, I think I said, मतलब ये बोलते हैं कौन, मिस्टर कांगा उन्हें रिप्लाई दे रहे हैं उनके जवाब पर, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड. तो पूरी दुनिया में तुम्हें काफ़ी सारा काइंडनेस भी नज़र आता ही होगा. Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. And I could not tell how enthusiastically he agreed with me. So yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer. मतलब मेरी आवाज़ तो लोगों तक पहुँच रही है, but nobody is able to understand that with how much of enthusiasm, कितने पे मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ, हैप्पीनेस के साथ, विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, ही इज़ कन्वेइंग हिज मैसेज टू द वर्ल्ड. ये लोग नहीं देख पाते बिकॉज ही इज़ फिजिकली challenged. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time. So every time he needs to shift his chair to just see the time. I wanted to make every 1 hour of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ. मतलब उन्हें समय जैसे जैसे बीतता गया और उनके इनर स्ट्रेंथ से जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ वो वर्ल्ड को देते गए, सो ही फेल्ट रिलीफ ऑन दैट. एंड ही इनफैक्ट ही ऑल्सो जस्ट मैंशनड वन मोर थिंग, हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. और ये मेरे लिए बिल्कुल भी मतलब मैटर नहीं करता कि मैं बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता. इट रियली डजेंट मैटर टू मी. ओके, दिस इज़ वॉट ही थिंक्स. So, what is the next thinking he has? I told him how he had been an inspiration beyond glitch for me. Glitch means phrase of or idea used so often that it loses its meaning. Okay, phrase or idea used so often that it loses its meaning. And surely for others did that thought help him. I told him how he had been an inspiration beyond glitch for me. मतलब मेरे लिए वो मतलब किस तरह की इंस्पिरेशन रहे हैं. आई टोल्ड हिम. ओके, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और औरों के लिए भी. डिड दैट थॉट हेल्प हिम? तो सच काइंड ऑफ एज बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड.
सो दिस थॉट इज एनकरेजिंग फॉर स्टीफन हॉकिंग और नॉट, मतलब वो दुनिया को बहुत बदलने की ताकत रखते हैं, इंस्पायर करने की ताकत रखते हैं. थिंकिंग अबाउट दैट क्वालिटी ऑफ हॉकिंग, डज हॉकिंग feels happy about it. Okay, so he said no, उन्हें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क. और फिर से कांगा को लगता है कि मैंने फिर से क्यों सवाल पूछ दिया, इन्होंने फिर से नो जवाब दे दिया. वेन योर बॉडी इज क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स एंड ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. It doesn't do much. तो मतलब because he mentions one thing, that he is not like a normal person. In fact, he is so famous, but still he is not like a normal person. He's already claustrophobic. Claustrophobic means what? Very small and suffocating experience, fear. मतलब वो डर होता है एक suffocating जगह पे रहने के लिए. तो he has already become claustrophobic. एक जगह पे बंद कमरे में रहना पड़ता है उसे, under the wall. Okay, inside some walls. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. So, and इट डज़न्ट डू मच गुड. तो मतलब ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो पाती कि मुझे जानने के लिए लोग एडमायर करने के लिए बाहर है इस दुनिया में, क्योंकि मैं उन्हें देख ही नहीं पाता. सो ही इज़ रिवीलिंग द फैक्ट कि वो भले ही बहुत फेमस साइंटिस्ट बन चुके हैं डिसेबल होने के बावजूद, बट स्टिल ही इज़ मिसिंग द आउटर वर्ल्ड. ओके, is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? So now Mr. Kanga is asking for an advice for disabled people which can help the other disabled people in the world. Okay, they should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. Things like the disabled Olympics are a waste of time. I know what you, मतलब यहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ उन्होंने वो चीज़ करना चाहिए जिनमें वो अच्छे हैं. ऑल द डिसेबल्ड पीपल शुड डू समथिंग व्हाट दे कैन डू. ओके, बट दे शुड नॉट वेस्ट. डिसेबल्ड ओलंपिक्स में उन्होंने नहीं जाना चाहिए. पता नहीं, इट्स परसेप्शन. ओके, आई नो व्हाट यू मीन. आई रिमेंबर दैट ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, एंड हाउ gleefully I had unstringed it one night. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे याद है कि मैं एक बार एक स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था, एंड ही वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम, एंड ही इन फैक्ट वॉट ही डिड, ही अनस्ट्रिंग्ड इट. और उन्होंने वो गिटार इतना चलाया कि उनके स्ट्रिंग्स टूट गए. अनस्ट्रिंग्ड मीन्स ब्रोकन स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स मीन्स वो जो तार लगे हुए होते हैं इन द गिटार, दे आर नोन एज स्ट्रिंग्स. ओके, द हाफ आवर वॉज अप. आई थिंक आई हैव annoyed you enough. आई थिंक आई हैव annoyed you enough, आई सेड ग्रीनिंग. हंसते हुए बोला. किसने? मिस्टर कांगा ने. कि दैट मैंने तुम्हें शायद कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया. एनॉयड मीन्स तंग करना. ओके, सो थैंक यू फॉर डैश डैश डैश, थैंक्स फॉर मीटिंग, ऐसा उन्हें मिस्टर कांगा ने थैंक यू बोल दिया. स्टे, आई वेटेड. स्टे उन्होंने फिर बाद में, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने उन्हें रुकने बोल दिया. आई वेटेड. हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन. तुम यहाँ चाय भी पियो और यहाँ का गार्डन भी देखो. ही मिस्टर हॉकिंग सेड दिस. ओके, द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड every inch, rumbling along in his moistured wheelchair while I dodged to keep out of the way. Okay, so this is how Stephen Hawking showed him his garden, every inch of his garden. और वो उन्हें शायद असिस्टेंट तो होंगे ही साथ में. सो ही वॉज जस्ट मूविंग अहेड अलॉन्ग विथ हिज व्हील चेयर. व्हील चेयर से वो घुमाते हैं उन्हें. ओके, so this, we couldn't talk very much. The sun made him silent. So after a little while they could not talk much. अभी शायद वो, if he's moving here and there, maybe Mr. Hawking is also getting tired. Okay, so they could not talk much as the sun was also disappearing. शाम का समय हो चुका था. Okay, an hour later we were ready to leave. और एक आध घंटे बाद दोनों भी एक दूसरे को बाय बोलने के लिए रेडी थे. मिस्टर कांगा ऑल्सो एंड Mr. Hawking also. I didn't know what to do. I could not guess him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. After meeting him, वो उन्हें हैंडशेक तक नहीं कर पाए मिस्टर कांगा. So he wanted to do that, but he met a wonderful man in the world, but still he could not just shook his hand or just
had a good connection. I looked back and I knew he was waving. तो जैसे ही पलट के देखा तो ऐसा थोड़ा थोड़ा वेव करते हुए उनके हाथ थोड़े हल्का फुल्का मूवमेंट हुआ होगा. ओके. True, he wasn't. Watching him, an embodiment of my bravest self. The one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. Okay, so watching him, an embodiment of my bravest self. The one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. तो इस तरह से मिस्टर कांगा जिस पर्पज से वहाँ पे आए थे, ही मेंशंस दैट हिज जर्नी इज ओवर नाउ एंड ही व्हाट ही वांटेड ही हैड डन. What he wanted to know about Mr. Hawking, he had done it, and he just believed about certain things, and those things were convinced by Mr. Hawkins also. Okay, so it is nothing but a person must have a bravest self, means अपने अंदर bravery होनी चाहिए, no matter how physically challenged you are. Okay, so as you should understand, the means a physically challenged person became renowned personality in the world, and he is a famous scientist, okay, of this century. So you should understand that what is the importance of being perfect. अगर physically challenged person इतना कुछ कर सकते हैं, why can't we? Okay, thank you, take care.